All right, now let me take you through all that anticipation that's now building around the Chandrayaan-3. It's barely 1 day to go for the Chandrayaan-3, India's ambitious moon mission, to land on the surface of the moon, and the first to be on the South Pole. Of course, as anticipation and excitement builds, here's a quick look at what the Chandrayaan-3 mission is all about. Of course, the lander, Vikram, is named after Vikram Sarabhai. As we know, Sarabhai is the father of the Indian space program. And this has been designed, the Vikram lander and the Pragyan rover is designed to stay on the surface of the moon for at least 14 days to carry out its expedition. The number of sensors have been put up to ensure a safe touchdown. In fact, this time, all the more, they're going to be focusing on the speed of the lander, only to ensure it's a soft landing as compared to what we saw of Chandrayaan-2. And we know that the Vikram lander can generate a 938-watt power. It will be engaged in exploring the lunar's South Pole. It is India's first touchdown on the South Pole, and of course, of any other country that's ever ventured, India is the first to touch the South Pole in particular. Now, the role of the Pragyan rover, as we know that the rover carries instruments for lunar surface study. It's going to be studying extensively the composition of the soil on the moon, if there's any traces of water. It provides data related to the moon's surface, and ISRO will be recording that in the 14 days that the lander and the rover is there on its mission. It will be conducting experiments on the moon for at least one whole lunar day. That's equal to 14 days. It will be gathering elemental composition of the atmosphere. We know this is the data that ISRO will be banking on for any kind of further moon missions, or for that matter, to explore any other planet in the future. This will be great basis to bounce off on. Of course, India is hugely anticipating a success of the Chandrayaan-3 mission, and it's no less than 30 hours away, barely 30 hours, and we're going to see a touchdown of the Vikram lander on the moon's surface. And with this lander, click the very latest image of the moon, wherein the craters can be very clearly visible. These are images that you see on our screens. The photo is it's been taken from 70 kilometers away from the moon. These are the first images that ISRO has released, but a top ISRO scientist says that there is a plan B in place if at all this does not work. If at all there is a glitch, then ISRO has a couple of plans that they have in place. Though ISRO chairperson says that the mission is on track and the system is undergoing regular checks to ensure smooth sailing of the spacecraft, yet they do have a couple of plans in case just to ensure this is successful. As per ISRO, the lander module carrying Vikram lander and the Pragyan rover is expected to land on the moon at around 6:04 p.m. tomorrow. वो लैंडिंग साइट का सिलेक्शन भी हमने ही विश्लेषण करके पूरी तरह से पहले की तस्वीरों की चंद्र की उसका पूरी तरह से एनालिसिस विश्लेषण करके वो डेटा को स्टडी करके उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना के उसके बाद ये निर्णय किया कि ये जगह पे एक 4 बाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाई 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। तो लगभग 3900 इमेज सेक्शंस जनरेट करके उसमें से एक पे हम ये विक्रम लैंडर को उतारने वाले हैं और उसमें से जो मेन अच्छी साइट है वहां नहीं उतर पाए तो दूसरी 3900 में से अच्छे सेक्शन पे सिलेक्शन करके वहां उतरान करेंगे। और जैसा कि हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं, 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उतराण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन का जो पहले प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस जो है वो सब यहाँ पे अहमदाबाद केंद्र में हुआ है, हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में।
23 से 27 तारीख तक फिर अगर वेट करना पड़ा तो इस बीच लैंडर कहाँ होगा, ऑर्बिट में होगा, किस तरीके से? ऑर्बिट में ही रहेगा लैंडर। जो मैंने बताया 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अलग साइट और अलग प्रकार की जो लैंडिंग साइट है, जैसे कि मैंने बताया 400 किलोमीटर दूर होगी, जो हमारी मेन अच्छी साइट जो कही जाती है। बट ये साइट भी अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहली साइट थी। इसीलिए हमारा भरपूर प्रयास यही है और मोस्टली कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम 23 अगस्त को ही अच्छी तरह से जो हमने मेन साइट आइडेंटिफाई की है वहां पे उतर पाएंगे। Basically, Chandrayaan-3 mission objective was to soft land in the southern region of the southern polar region. That was the objective. Also to have that in situ experiments there, so that it will be the science will be used for that the global scientific community for discovering some many new things. This is the with this objective, that is Chandrayaan-3 was configured, which is similar to Chandrayaan-2, this one. Only thing is, except that the orbiter in the Chandrayaan-2 is replaced by a propulsion module here. Otherwise, it is almost the same as what have flown in the Chandrayaan-2. भारत का तीसरा चंद्रयान चंद्रयान-3 अब चंद्र के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा। तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे। और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। The speed is brought down to a few hundred meters per second. From then onwards, then an orientation is corrected, and after that, further speed is reduced, and then various sensors and the cameras come into action, and that's how that is to make sure that the descent is as expected and as prescribed.